A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today my topic is for class 6th subject English. Dear students, आज हम स्टोरी सेक्शन से और एक स्टोरी पढ़ेंगे. पहले मैंने आपको एक स्टोरी पढ़ाई है इसमें स्टोरी सेक्शन से, और आज हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर. और पहले मैंने कुछ वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पे लिखी है. आप अपने कॉपी पे इन वर्ड्स की मीनिंग मैं यहाँ से बताऊंगी, तो आप वहाँ से लिखते जाइए प्यारे बच्चों. शेफर्ड मीन्स चरवाहा, ट्रेजर मीन्स खजाना, कॉटेज मीन्स झोंपड़ी, स्मॉल हाउस, अनएजुकेटेड मीन्स अनपढ़, फेस सामना करना, डिस्गाइज्ड मीन्स बदले बेस में, म्यूल खच्चर, केव मीन्स गुफा, शेयर मीन्स हिस्सा, मीगर मीन्स मामूली, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी. Let us begin. Dear students, a poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were few schools in those days. Dear students, एक दफ़ा ईरान के एक गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था, जिसको हम चरवाहे को बोलते हैं इंग्लिश में शेफर्ड, और कश्मीरी में इसको बोलते हैं पोहल यसवाना च. He was very poor. वो क्या था? वो बहुत ही गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं थी. किसके पास? इस शेफर्ड के पास. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. वो कभी स्कूल नहीं गया था और ना ही उसको पढ़ना लिखना आता था, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे. अनपढ़ था मगर वो वाइज था, अक्लमंद था. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. गरीब और अनपढ़ होते हुए भी ये शेफर्ड बड़ा अक्लमंद था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो लोगों के दुख दर्द को समझ जाता था और उनके मसाइल का सामना हौसले और सूझबूझ से करने में उनकी मदद करता था. कौन करता था? ये शेफर्ड, क्योंकि ये वाइज था, वाइज मैन था. बहुत से लोग, many people came to him for advice. बहुत से लोग उसके पास आते थे. किस लिए? मशवरा लेने के लिए आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. तो फिर वो क्या, जल्दी ही वो फेमस हो गया. तो अपनी अक्लमंदी से, जो वो अक्लमंद था और लोगों के साथ वो दोस्ताना बर्ताव करता था, इसके लिए वो इतना मशहूर हो गया. कौन? शेफर्ड. अपनी अक्ल से, अक्लमंदी से और दोस्ताना बर्ताव से वो बहुत फेमस हो गया. The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस मुल्क के, जिस मुल्क में ये रहता था ये शेफर्ड, उस मुल्क के जो किंग था इस मुल्क का, उसने जब इसके बारे में सुना और उसने इससे मुलाकात करने का इरादा किया. Disguised as shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक दिन
یہ جو کنگ تھا اس نے شیپرڈ کا بیس اختیار کیا اور کھچر پہ چلا گیا. کہاں پہ کھچر پہ چلا گیا؟ اس شیپرڈ کی جہاں پہ یہ شیپرڈ رہتا تھا، کہ یہ ایک گفا میں رہتا تھا تو وہاں پہ یہ چلا گیا. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. جو ہی اس شیپرڈ نے اس کو دیکھا، کس کو؟ اس بادشاہ کو، مگر یہ بادشاہ بیس بدل کے وہاں پہ گیا تھا، تو اس نے اس کا خیر مقدم کیا. کس نے؟ شیپرڈ نے. تو he took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. And the king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. یہ شیپرڈ نے اس تھکے ہوئے مسافر کو گفا کے اندر لایا، اس سے پانی پینے کے لیے دیا اور اپنے معمولی کھانے کا ایک حصہ اس سے کھانے کو بھی دیا. تو کنگ نے رات کہاں پہ گزاری؟ کنگ نے رات کو اس گفا میں آرام کیا. تو وہ اس شیپرڈ کی مہمان نوازی سے بڑا یہ ہوا، متاثر ہوا، اور اس نے اس کی یہ وائز کنورسیشن سن کے وہ بہت متاثر ہوا. کون؟ شیپرڈ. اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے. باقی وسلام.